Dear students, in the last lecture we learned about various types of processes and simple introduction to thermodynamics. Now today we will see the work done in different cases. First of all, what we will do, we will first consider a gas. Suppose this is a gas contained in a container, okay, and this is the piston. This is the piston, okay, and this is simply heat is gas. You know, this gas will exert a pressure on the walls of the container as well as on the inside of the piston. Okay, suppose we write that by P gas. Okay, and an equal and opposite pressure will be exerted on the outside, that is written as, suppose, P external. P external. What is P-A-X-T? It is the external pressure, or you can say atmospheric pressure, external pressure. And P gas is simply pressure exerted by gas. Okay. What you have to remember, that at equilibrium this P external is always equal to P internal. Yeah, P gas internal will be simply gas, but it will be in opposite direction. That is why we will put a negative sign here. Now if we have to calculate the small work done by the gas, we will write that small work done by dW. This is very small work done by simply the gas. That will be equal to, first, the pressure of gas, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पिस्टन पे, और कितना चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, dV. ठीक है, but this will be, P will be always positive because we are taking the pressure of the gas. You have to remember this. But what you generally see in books, जो आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होता है नेगेटिव. This is very important here. ठीक है ना? This is basically because we cannot measure this internal pressure of the gas, but we can measure external pressure of a gas. Suppose एक टायर में गैस भरा हुआ है, हम क्या बाहर से मेजर करते हैं, इनसाइड तो नहीं करते हैं ना. सो बेसिकली वी आर एक्चुअली एक्सर्टिंग आउटसाइड प्रेशर. जब वो इनसाइड के प्रेशर के इक्वल हो जाए तभी वो हमें मेजर देता है. दैट इज व्हाई वी राइट दिस E एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गैस. अगर हम इस प्रेशर ऑफ गैस जो इंटरनल है इसको हम एक्सटर्नल से रिप्लेस करेंगे, देन वी विल राइट नेगेटिव हियर, एंड in place of P gas we will write simply P external. This is very important. अगर कभी बुक्स में सीधे ऐसे लिखा होता है dW will be equal to negative of P dV, इसका क्या मतलब है? This pressure is basically the external pressure. Okay, ठीक है. अब this small work done
is equal to minus P external as given above dV. If we want to have the total work done, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर हम स्मॉल पार्ट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट द होल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रल और डिफरेंशियल ये कैंसिल होगा, सो यू विल गेट ऑलवेज W, capital W will be the work done. But yeah, negative we can take outside, or we can write P external dV. Suppose volume is changing from V1 to V2, V1 to V2, ये हमारे पास सिंपल रिलेशन एक है, you have to remember. This is basically ये फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। Now we will take the different cases. Case number 1. What you have to remember? Work done is basically equal to minus V1 to, suppose volume changes from V1 to V2, P external dV. ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। Now first we will take the isochoric process. Isochoric process. We have to calculate the work done. आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी द डीवी, किसके इक्वल होगा, दैट इज 0। सो व्हाट अबाउट वर्क डन, यहाँ पे क्या है, अगर ये 0 है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 0 हियर, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, सिंपली वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस, दैट फॉर एन isochoric process work done is basically equal to 0. Okay. Now we will consider the case second. Case second लेते हैं हम, isobaric process. Isobaric process. Isobaric process में क्या होता है, pressure is constant. अगर pressure constant है, that means we have this relation here, जो सबके लिए applicable है, वो हमें खाली conditions change करने हैं। That means we have this work done is basically equal to minus integral V1 to V2 e dV। ओके, बट यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। जब भी प्रेशर हो, एनीथिंग इज कांस्टेंट, वो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल से बाहर, या डिफरेंशियल से वो क्या होता है, आउटसाइड लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस पी, दिस इज कांस्टेंट, वी विल टेक इट आउटसाइड, इनसाइड क्या लिखेंगे, V1 V2 dV। ओके, ऑलवेज जो अभी मैंने बताया, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल ऑफ, अगर आपके पास ऐसे है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल ऑफ x, सपोज दिस विल बी सिंपली इक्वल टू x, ठीक है, बिकॉज दिस एंड दिस विल गो, इट विल बी x। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो, इट विल बी इक्वल टू v, बट यहाँ पे लिमिट दी हुई है v1 टू v2, व्हाट वी विल राइट, माइनस p, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, इनसाइड क्या बचेगा, खाली इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ v विल बी इक्वल टू सिंपली v एज पर दिस फॉर्मूला, ठीक। बट यहाँ पे लिमिट क्या है, v1 टू v2, वी विल राइट हियर v1 टू लोअर लिमिट टू एंड अपर लिमिट। सो ये कैसे देना होता है लोअर लिमिट, वी विल सिंपली इंट्रोड्यूस वैल्यू हियर, अपर लिमिट फर्स्ट v2 माइनस v1,
okay, in place of v. That is how upper limit and lower limit are inserted in this way. So इसका मतलब है v2 माइनस v1, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, या सिंपली डेल्टा v. So remember delta v is equal to v2 minus v1. या सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम था पहले, फर्स्ट कितना, एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम. ऐसे भी लिख सकते हो v फाइनल माइनस v इनिशियल. ठीक है. सो सिंपली अगर इनकी डिफरेंस आप लोगे वो क्या होगी, सिंपली द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v. सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना आया हमारे पास, so that will be simply equal to given by this relation minus p delta v. Okay, but two cases यहाँ पे arise होते हैं, two cases. अगर केस ए सपोज लेते हैं हम, जहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब हमने क्या लिया था इन कंसिडरेशन, हमारे पास ये एक सपोज ये पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है ना, ये गैस, ये v1 वॉल्यूम था. अब ये क्या हो रहा है, इसी में एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स सपोज ये यहां तक पहुंच गया. सो दिस इज नाउ v2, दिस इज v1, या इसको आप v इनिशियल कह सकते हो, ये v फाइनल. ये सिंपली क्या है, एक्सपेंशन, मतलब गैस एक्सपेंड हो रहा है. एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. सो व्हाट यू विल राइट, एक्सपेंशन के लिए we will write a simple relation that v2 will be greater than v1, है ना. सिंपली यहां से आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन. सो व्हाट विल बी द चेंज इन v, डेल्टा v किसके इक्वल होगा, वो तो हम लिखते हैं v2 माइनस v1. अगर सपोज ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम आप माइनस करोगे, वो क्या होगा, वो हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना. तो वेरी सिंपल है. सपोज इसका वॉल्यूम कुछ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका सपोज 10 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगा, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज मोर एज कंपेयर टू दिस वन. इसमें से काटना है, नेगेटिव करना है, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अब जब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा एज पर दिस इक्वेशन, अब हम ये इक्वेशन इनटू कंसिडरेशन लेंगे, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. ये नेगेटिव है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, दैट आपने अभी तक खाली याद रखा होगा कि वर्क डन by the gas या by the system, work done by the gas, आपने पढ़ा होगा सिस्टम, work done by the system या by the gas, ठीक है ना, is negative according to what, according to Iupake convention, है ना. ये आपने पढ़ा है, तो हमने अभी देख लिया क्यों ये नेगेटिव आ रहा है एक्सपेंशन के, ठीक है ना, बिकॉज change in volume is basically positive, so work done is minus P delta V, so it will be always negative. अब हम यहाँ पे केस सेकंड लेंगे, केस बी. केस बी में क्या है, कंप्रेशन. ये तो एक्सपेंशन की बात हुई, अभी हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या, अब हम रिवर्स हो रहा है. रिवर्स मतलब पहले वॉल्यूम सपोज इतना था, दिस वाज वॉल्यूम, अब ये कंप्रेस ही हो रहा है, तो
V2 कितना होगा, बोले नीचे की तरफ आ गया, कंप्रेस हो रहा है ना, दिस इज V2। अब वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है, V1 है ना। सो फॉर कंप्रेशन व्हाट वी विल राइट, V2 is less than V1 और V1 is greater than V2। अगर हम इस रिलेशन में डालेंगे V डेल्टा V is equal to V2 minus V1, so it will be, अब कौन सा ज्यादा है, दिस पार्ट इज मोर है ना, सो ये क्या निकलेगा, नेगेटिव, बिकॉज इसके साथ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, दिस इज मोर, सो इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालेंगे, सिंपली वी नो माइनस P del V, this is negative for compression, this is also negative, negative will be positive। okay, so एक और पॉइंट आपने सीख लिया, वर्क डन ऑन द गैस या सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखोगे, वर्क इज पाथ फंक्शन, वर्क क्या होती है, पाथ फंक्शन, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस स्टेजेस, कहां से, सपोज कोई, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, सपोज दिस इज इनिशियल स्टेज, दिस इज फाइनल स्टेज, इनके बीच में कुछ और स्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वर्क इन सब पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। बट कुछ फंक्शंस क्या करते हैं, वो इनिशियल और फाइनल पे ओनली डिपेंड करती है, नॉट इन बिटवीन, ठीक है ना, तो दोस विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, बट वर्क इज ऑलवेज पाथ फंक्शन। और एक और हमेशा रखोगे, वर्क रिवर्सिबल, जब भी वर्क रिवर्सिबल करते हैं ये इक्वल टू नहीं होती है वर्क इरिवर्सिबल। दो पॉइंट सभी याद रखोगे और इनको हम अच्छे से फिर बाद में डिटेल से करेंगे। ओके, नाउ वी विल टेक द केस सेकंड। केस सेकंड हमारे पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल जब भी आएगा दैट मीन्स इट इज ऑकरिंग इन इनफाइनाइट स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में, ठीक है ना, रिवर्सिबल। आइसोथर्मल तो ये पता ही है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो क्या फॉलो करता है, बॉयलिस लॉ। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो सपोज इस फॉर्म का आता है, दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर हमें वर्क डन निकालना होगा, दैट इज सिंपली गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व। सपोज दिस इज P, this is V, so this will give me the work done। okay, that means area under the curve। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें खाली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मिलेगा, दैट इज व्हाई आई राइट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव दिस that W, that means work done, is basically equal to work done is equal to minus integral of P dV। P is here external, okay. Now also we can write it as, if volume changes from V1 to V2, we will write it, we will give the limit V1 V2 P dV। But for an ideal gas,
ideal gas. We know PV is equal to nRT. So P will be simply equal to nRT upon B. So in place of this P, we can put the value this one. Okay. So we will write then W will be equal to minus integral V1 to V2. This equation I am talking about, that we can write in place of P N R T upon V and dV is there. So we will write dV. Suppose now we will take a condition, or this is, we are discussing isothermal process, so temperature will be obviously constant. So remember, N is number of moles, this is also constant. R is gas constant, and for isothermal process temperature is constant. So these quantities we will take out of the integral. So W will be equal to minus nRT integral V1 to V2 dV upon V. Okay. So this will be the simple relation. Now, if you have this type of integral of, suppose dx with respect to x, it will be equal to ln of x. Okay, so it is dv upon v. So integral dv upon v, so this will be equal to, we will write it minus nRT v1. So we will first, okay, we will change it to directly to ln. Okay. Here we will change it to ln of v as per the formula, and lower limit and upper limit. Okay, we know now how to insert this. We will write minus nRT ln of v2 minus ln of v1. Remember, log of, or ln of m minus ln of n is equal to ln of m upon n. Okay, so this can be also written as minus nRT. We can write ln of v2 upon v1. Why? Because as per this formula. Or you can say log of m minus log n is equal to log of m by n. So you got this. So this will be the work done. This will be the work done for reversible process only. Isothermal reversible process only. And you can change it into log. Remember, natural log is equal to 2.303 of the log. This is to the base 10, this is to the base 8. Okay, so you can also write a relation minus 2.303 nRT log of v2 upon v1 also. So this is also right. Now, if we take temperature as constant, if T is equal to constant, then for two status we can write V1 is equal to
P2 V2. Why? Because this will be equal to nRT1. This will be also equal to nRT1. If number of moles remain the same, then temperature is constant. Then for the two processes, we can write P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to simply nRT. Okay. So work done then can be written as minus 2.303 nRT log of P1 upon P2. Why? Because you can write from this relation V2 upon P1, V2 upon V1 will be equal to P1 upon P2. So in place of V2 upon V1, we are inserting this value. That is how this relation is also right, but only for reversible process. Reversible one. Here again two cases may arise. First one, if V2 is greater than V1, then W will be simply equal to negative expansion. Okay. Second, if V2 is less than V1, then W will be positive, and this is simply compression. Okay. Now we will go to the next, that is irreversible. First was reversible, this is irreversible isothermal process. This, remember, this occurs in definite steps. Definite steps and against, always remember, against constant external pressure. So if you first see this irreversible isothermal process, always remember these 2 pointers, that this will be occurring in definite steps and against external constant pressure. So work irreversible, we will write I double R is equal to minus P external dV. We will write the same. But for irreversible process, this occurs against a constant external pressure, so this will be constant. So we will take it out of integral. We will write simply as dV. Or this can also be written as, for a big change, we can write it as P external delta V. Okay, this is same as isobaric process. तो वर्क डन हमने निकाली है isobaric process के लिए. This will be same relation as for that. And if I mention irreversible adiabatic process, then in that case also work done will be equal to minus E external delta V. And also remember, work done
work done for a reversible adiabatic process. Adiabatic process. This is irreversible added, this is reversible. Then work done will be simply equal to nr upon gamma minus 1 T2 minus T1. We will see these. What is gamma, Cp upon Cv, how these are specific heat capacity ratios and all that while we will solve the different questions. First, try to remember these. Okay. In the next video, we will try to solve different problems based on these. Okay. Thank you.